my hand. दीप को नमन। अच्छा, दीप लावत असते. Namo Namah everyone. Namo Namah everyone. Welcome to the book release function of the introduction to yoga book written by all of you. And we'll start the function with a prayer and Deepa Prajwala. So Deepa is दीप को already. नमस्ते कर लेते हैं यहाँ पे. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. बैठ जाइए सब लोग. Why don't you speak in this? Namo Namah everyone. So I'm very glad to see you all offline and online. आप लोगों को मिलके बहुत खुशी हुई. इस खुशी के अवसर पर today is Dussehra, and we have decided to release our book Introduction to Yoga on this auspicious occasion. तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इस बुक के बारे में देना जरूरी है. Of course, all of you are the writers of the book. तो आपको तो ये सब पता ही है, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं, जो गेस्ट हैं हमारे, उन लोगों को ये पता होना जरूरी है. धनंजय, some people are not muted. I request you to mute. Okay. So the whole process, you know that New Age Yoga has got already published one book earlier. This is to yogis. This is to yogis. And this book was meant specifically for teachers. ये book खास करके सिर्फ teachers के लिए बनाया गया. क्यों? क्योंकि this was a referral book. This is to yogis is a referral book for teachers, yoga teachers who are teaching students, and it was meant to be something where, like a referral के अगर किसी को diabetes है, किसी को blood pressure है, किसी को arthritis है, तो उनको क्या सिखाया जाए, तो वो उस प्रकार का बुक था. It is not a book for academic reading. It's not even a book for beginners. तो अभी जो हम लोग बुक करने जा रहे हैं उसकी बैकग्राउंड थोड़ी ऐसी है कि जून 21, 2022 में we started a very big project, or rather the Bombay Municipal Corporation, MGMC. They started a very big project called Shiva Yoga Kendra. For them it may not be very big, for our purpose it was very big. And one day, precisely on 21st of May, Pratibha called me, and Pratibha Patel, one of our leading teachers here, she called me to tell कि ऐसे ऐसे एक
बीएमसी ने स्कीम तैयार की है, तो उसमें अपने को कुछ करना चाहिए. I would like to definitely teach, and I think New Age Yoga should also take a lead. So, taking a lead from that, and I found out that there was an expression of interest to be filed with the BMC, and वो एक प्रोसेस था. सो वो प्रोसेस को कंप्लीट किया, और हमारे जैसे और 5-6 इंस्टीट्यूट्स ने वो प्रोसेस कंप्लीट किया. उसमें पता चला कि the institutes which are allowed, or rather they are empaneled, they have to be, the condition was they have to be YCB registered, YCB certified. So that was a very big point. Secondly, they have to be certified for more than 2 years. And the teachers whom they will appoint to teach the common citizens, they have to be also certified teachers with experience. So all these things were falling in place as if कि हमने जो इतने सालों में ये सर्टिफिकेशन का, टीचर ट्रेनिंग कोर्स का हमने जो के थ्रू जो बनाए हैं टीचर्स, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसे हमारे लिए बनाई है, इस तरह का ये एक स्कीम था. So obviously we took a lot of interest and we filled the UI, and we were called for a meeting in a few days. We had the opportunity to meet the Deputy Municipal Commissioner at the head office, BT, and हमारे जैसे yoga institute, Santa Cruz, Art of Living, then Kaivalya Dham, Patanjali Yoga Peeth. So these big schools were there, and not to our surprise, the main people behind it, only we were there. Other people were the teachers who were representing them. So obviously our inputs in that meeting were a little more, and were little, because we had a background of what it takes to teach, to assign teachers for this kind of project, what should be the challenges, this सब थोड़ा सा idea थी. So and that is why we were noticeable, and later on we had more rapport with the Deputy Municipal Commissioner and EHO, the Executive Health Officer, so much so that they called us for giving inputs for making an app, which is not still yet come, but inputs के लिए इनको तभी बुलाया गया था. Then in between we were giving inputs of all kinds. जैसे किस तरह से, because see, all said and done, for us this is a regular activity. Teaching yoga is a regular activity. For BMC it is not. For running a class, ये BMC के लिए कोई regular activity नहीं, हमारे लिए तो regular activity है. तो ये किस तरह से उसका अटेंडेंस लिया जाता है, कैसे रखना चाहिए, तो ये सारे इनपुट्स हमने उनको देने को शुरुआत करी. So some of the inputs were taken, so much so that लोगो के लिए आपको याद होगा कि उनको क्या लोगो बनाना चाहिए, उसके लिए भी हमारे से उन्होंने इनपुट्स लिए थे. So कहने की बात ये है कि because of our close association with the BMC and our quick action, we could have many centers active, and our teachers, almost 56 centers were taught at 56 centers. 9 teachers were teaching the citizens out of about 150. And आज में पता चला कि इतने तो बाकी और कोई भी स्कूल के नहीं है, इससे कई कम है. बिकॉज आई डोंट नो, प्रोबेबली जब हमारी मीटिंग थी तभी भी हमको ऐसा लगा कि पीपल आर लिटिल स्केप्टिकल अबाउट डीलिंग विथ बीएमसी बिकॉज ऑफ सम नोन रीजंस. बीएमसी में क्या होता है कि इट्स सच अ बिग वॉल्यूम, एंड इनफैक्ट दिस ऑल्सो इट्स अ वेरी बिग वॉल्यूम. अभी आज भी अगर देखा जाए तो लगभग 4 से 5 हजार लोग हर रोज सीखते हैं. एवरी डे अबाउट 4 to 5,000 पीपल आर लर्निंग योगा थ्रू दिस स्कीम, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1,500 पीपल आर लर्निंग फ्रॉम नहीं. तो इतना बड़ा वॉल्यूम है, उसको मैनेज करने के लिए इतने 24 वार्ड में, और उसका जो कॉम्प्लिकेशंस है, कंसीडरिंग ऑल दैट, एंड for good or bad, whatever, they have very set systems.
the systems for उनका जो अटेंडेंस लेने का सिस्टम है या पेमेंट का सिस्टम है, अभी तक अपने पेमेंट्स आए नहीं, बिकॉज देयर मशीनरी हैज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपरली सेट। तो इस वजह से there is a lot of delay in things, there is a lot of confusion, so many decisions which were taken at the center, the ward people were sometimes not understanding or they were not able to follow. All of you who are teaching at the centers, you are aware of that. Of course there were other challenges also centers mein, jaise kuch centers mein there is a problem of hygiene, some centers are small, so one by one we were trying to get this sorted out. But on 3rd of August, when we saw the audio visual of students, where our teachers had given some sample videos, it was really eye-opening, and we found that how the students are involved and how this process is really changing their life. Because who are these people who are coming there? They are not the people who want to pay money and go for a yoga class. So you can understand. Not that they are, see, in Mumbai, everyone comes from middle class of Mumbai is a very good person. उनके घर में सब कुछ होता है, टीवी फ्री सब कुछ होता है. But when it comes to paying money for yoga class, there is a chosen few. You are all teachers. आप लोग teachers हैं, तो आपको पता है कि पैसा देके सीखने के लिए योग जैसा विषय सीखने के लिए लिमिटेड लोग आते हैं, कम लोग आते हैं. तो because of that, you will find that when this was open, made open to general public, lot of people took interest. Even now, a lot of people are taking interest, and they what they had not learned in their entire life, they have come and learned over here, and they are very eager. The attendance percentage is very good. What we don't see in our paid classes also. उतना अच्छा attendance हम लोग, Himali, you will agree that you will not find this kind of attendance in the regular class. And they are expressive also, they are eager, so much so कि BMC का एक रूल है कि 3 months में ये बैच रिन्यू करना पड़ता है. मतलब जो ओल्ड लोग हैं वो इसमें से निकल जाएंगे और नए लोग, विच इज वेरी नॉर्मल ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 हजार लोगों को इसका लाभ मिल रहा है. और इसके बाद में और भी लोग हैं जो आने चाहिए. इन मुंबई पॉपुलेशन इज 1.3 करोड़, 10% भी अगर लिया तो 13 लाख पीपल कहाँ, 4-5 हजार कहाँ, तो बहुत सारे लोग. एंड BMC is not advertising at all. I think this is the reason why they are not advertising, because if they start advertising, people, they will be, it will be difficult to handle this number. मुझे ऐसा लगा. So whatever, because of that, whatever challenges we are having to fill the numbers, that is different. But यहाँ पे रुकना नहीं है, तो 3-3 महीने के बाद चेंज करना है, नए लोग लाना है. तो ये नए लोग लाने की जो जिम्मेदारी है वो भी फाइनली हमारे टीचर्स के ऊपर ही आ गए. Okay? Because in spite of this being a free education, free yoga service, and not a normal regular class from certified teachers like you all, expert teachers, even then people don't realize, because yoga is not something which is an essential activity. आज भी आपके घर में है ना लोग बिना योगा के चल रहा है, उनका जीवन सही चल रहा है. ओके? और योग करने से आपके जीवन में जो बदलाव आया है, क्या वो आप उनको बता सकते हैं? It is difficult. What you are experiencing, it is very difficult. I experience in my own life. You must have experienced in your life. But I'm not able to. I'm not going to try also and even be able to tell you what changes it has brought about. So it is very difficult to tell a person कि भाई आप जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को मतलब कंपलसरी कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा. हस्बैंड को नहीं कर सकते, वाइफ को नहीं कर सकते. No. So there is a challenge of numbers also after this. So उसके लिए BMC के साथ जाके उनको बताना कि ये क्या situation है, and they listen to us and they have changed their scheme of. उन्होंने बोला था कि
कंपलसरी है नए लोग आने चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू मेक इट अ लिटिल लीनियंट, यू हैव टू मेक इट एटलीस्ट 25-75 ऐसा हमने प्रपोज किया था. फाइनली उन्होंने एक नया ही रूल मतलब बता दिया कि जितना हो सके उतना पॉसिबल आप नए लोग लाओ, पुराने लोगों को कंटिन्यू कर लो. सो विच इज लाइक ओके, जैसा होता है उसे चलने में. Idea is that maybe second cycle they will make it compulsory. Maybe when they start advertising it, they will make it compulsory. So I have a direct rapport with the Deputy Municipal Commissioner Sanjeev Kumar ji, who is the entire head of the entire project. And I happened to have a conversation with him on the message. He said that, of course, you are one of the leaders, and he said that I want to reach 50,000 people per day. Teach 50,000 people yoga per day. So you can understand what level of involvement is required. 50,000 मतलब आप कैलकुलेट करो कितने 150 1,500 एटलीस्ट 1,500 से 2,000 आपके सेंटर्स हम तो कर ही नहीं सकते. आज के सिचुएशन में कोई नहीं कर सकता है. So he said, are you prepared? They said, I'm sure. I'm prepared, definitely. If given a chance and we work together, definitely it is possible. So you can understand that what is the potential of this scheme. This kind of a scheme is running in Delhi for last 2.5 years already. So it is not that it cannot be done in a place like India. दिल्ली में ऑलरेडी आप एपी सरकार कर रही है, ये मुंबई में भी पॉसिबल. Another thing is, I used to first think that there may be political interference in this scheme, but with the change of government or with whatever is happening outside, there did not seem to be any change in the BMC. Those people were firm with their own decision and process. And since I'm talking to them daily, I'm meeting them and understanding. This is a small thing in their entire. अभी तो काफी वो busy है, वो medical centers कुछ तो है, उसके अंदर बहुत busy है, तो हम इससे बात हो नहीं पाई. But what I mean to say, they are sincere in their efforts. Another thing is, we have been always told by people कि BMC से काम कर रहे हो के साथ में, तो पैसे के बारे में थोड़ा केयरफुल रहो. उनको भी पता है, इसलिए हम सारे टीचर्स को पहले से ही बोल के रखा है, पैसा आपको कब मिलेगा इसका कोई भी गारंटी नहीं. जब हमको मिलेगा उसी दिन आपको मिलेगा, उसकी गारंटी. लेकिन हमारे को कब जब मिलेगा तब मिल सकता है. तो धनंजय इज वन ऑफ द लीडिंग administrators from our side, and Pratibha is there, and Himali is there. All ward leaders are there who are working very, very diligently towards this. I almost now I have taken a back seat and I'm just overseeing this whole thing. Okay, but all the ward leaders, they are regularly, Sajanya is there, they're regularly visiting the ward offices, they are negotiating with the people, whatever shortfalls are there. पहली सिस्टम में तो उनको कुछ ना कुछ डाउट आते रहते हैं, ये लाओ वो लाओ, अटेंडेंस लाओ, इस फॉर्मेट में लाओ, उस फॉर्मेट में लाओ, ऐसा फोटो लाओ, वो लाओ, तो परेशान हो गए लोग. लेकिन फिर भी we are patiently, probably there is a structure which is being created. Followed तो बाद में create हो रहा है, follow हो जाएगा बाद में. लेकिन it is the silver lining is once the first payment is there, I think the subsequent things will become a regular. लेकिन इस सारे process में what we realized that there is one need, and that was madam's brainchild, Sanya madam's brainchild, कि लोगों को सिर्फ 1 घंटा आके आप आसन प्राणायाम सिखाओ, ये this is not done. It has to go ahead. If we are leading the project, let us go ahead and do something extra. And that is how we thought of the book, Introduction to Yoga, and the important concepts of yoga to be learned. क्योंकि लोग सिर्फ सीख के जाते हैं, और योग में क्या सीखा, मैं ये आसन सीखा, वो आसन सीखा, ये प्राणायाम सीखा, शवासन सीखा, बहुत.
उसके आगे उनको कोई कंसेप्ट पता होने के कारण भी नहीं, हम लोग बताते नहीं है, आपके रेगुलर क्लास में, डे टू डे क्लास में भी आप लोग नहीं बताते, है ना। तो it is not necessary for them to know that, but it is not given to them readily, but it is necessary, it is needed, because इसके पीछे अगर आपको आगे बढ़ना है योग में, तो वही ताड़ासन, वही भुजंगासन कर करके वो 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, 3 महीना करेंगे, उसके बाद में वो दे विल be probably tired or bored, and they will move to something else because there is no other alternative. So they should know what is the reason why they are doing all this, and that is why the important concepts of yoga, like triguna is there, like tridosha is there, pancha mahabhut is there, pancha klesha is there, chitta prasadana is there. All these are required, not very much in detail, थोड़ा थोड़ा. तो इसके लिए हमने टीचर्स को प्रपोज किया. ऑल द टीचर्स लाइक ऑलवेज दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड वी डिसाइडेड टू मेक 28 articles because this is the 28th year, and from this entire thing we had a very bright star emerging in the whole process, and Rishabh took a very very important role of leading the project from front, not only in writing, but also translating and coordinating with all the translators. We decided to make the book in 4 languages: English, Hindi, Marathi, and Gujarati. तो ये सारे टीचर्स के टीम को लेके ट्रांसलेशंस करना, इंग्लिश में आई थिंक ऋषभ हिमसेल्फ ही वाज डूइंग, हिंदी में दानिश दमेजा शी वाज टीचिंग, then Marathi mein Vaikhari is there, and Gujarati mein Kalyani madam is there. So all these people and all the 28 articles to be translated. It was a mammoth task, and when we started, we thought of releasing on the Dussehra day. मेरे पहले एक्सपीरियंस वाला नहीं पॉसिबल है, इतना तुम करोगे, मतलब प्रिंटिंग मीटिंग सब, इट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन मैडम वाज द वन हु वाज गिविंग एनर्जी टू दिस, नहीं करेंगे, and she, Rishabh, and Danish and Vaikhari and this gang, Kalyani. So all these people, they really took lead, and they're really working all the time. I'm seeing madam और ऋषभ का कुछ चल रहा है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करो, वो करो. So finally it was done, and then came the event of printing. Printing में क्या लगता है, पैसा लगता है. So obviously we had to, we have decided that this book is to be given free to everyone, so there is no charge. So obviously if it has to be given free, there is no return, and unfortunately today we are not in a position that we will give this number of, we would have loved to, but today we are not in a position to give this free to 4,000 5,000 people. So we are depending on some donations. So obviously wholeheartedly some of our teachers, some of our well-wishers have donated, but it was not enough to make this many number of copies. Whatever was possible with, but beautiful work has been done by Sujata, our designer, and she's really an artist. So I was really rest assured that if given to Sujata, it is going to be a fantastic job. तो उसने बहुत ही अच्छा एक जॉब किया हुआ है, एंड फाइनली आज 12:30 बजे वो बुक यहाँ पे आके खड़ा है. So I will request Sandhya madam to officially release this book. If you want to call anyone, you can call. हेमांगी मैडम, आपके हस्ते ये बुक हम लोग रिलीज करेंगे. Though she has always been an inspiring energy, though not a part of this book, but many other things. Hello. I think we can also send it online, the PDF of the book. Yes. We'll take it close to the screen. Yeah. No, that this screen is not operational. Okay. Here is the book for everybody to see. Ah. Yes.
So the book is in cover page is in color, and the inside of the book is in black and white, but very artistically done. So good pictures. So this is the book as promised to everyone, as promised to all. Whoever has come here today, everyone will get a copy, and you can take a copy for your teachers जो इसमें जिन्होंने part लिया है, and as promised to the online participants, our teachers and or everyone outside, this book is free for sharing to anybody. Okay, so the PDF version of this book is going to be shared with all. Just now I'll do the official sharing. I'm sending it to Nai teachers, ward leaders, and Nai Shiv Yoga at present. So now please forward it to your subsequent Ratna and Vyom groups. We are truly entering into digital world, no? Yes. वो काफी गया पहुंच भी गया. Yes. Yes. Thanks, Pravina. बहुत ही अच्छा बहुत. So those who are online and those who are offline, I'll request all of you to have a look at the book and go through it. Congratulations, sir and ma'am. Congratulations. Congratulations, ma'am, sir. Rishabh, congratulations. Congratulations, sir. Congratulations, sir. Book. I've sent her. Is she online? Ask her to open her video. Sujata, please can you start her video? प्रतिभा, हेलो. अभी आए हैं बुक लेके जाएंगे. Come by Khari. All together. Instrumental in all Marathi translations. She has also written the article. Yeah. Okay. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Wait, Hari. Okay. आता फक्त पुस्तक घ्या आणि जा, नमस्कार वगैरे नका करू. सौजन्या has written Bhakti Yoga. दिलीप जी आइए. दिलीप जी का पोएम लिखा है एंड चित्त प्रसादनम एंड पंचक्लेश. या सुंदर. अरे मुझे मतलब ये क्या बोलते हैं ये बुक हाँ? जो है ना मेरे बारे में स्पेशल मतलब बात ये लगी ऑनलाइन सर से बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ जा रही. बोलिए. हाँ ये जो बुक है ना इसकी स्पेशलिटी ये लगी कि एक तो ये जनरल पब्लिक के लिए मतलब कॉमन पीपल विल एबल टू यूज इट. और तो ऑब्वियसली फिजिकल लेवल पे हम सब करवा रहे हैं, मेंटल इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, पर कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करेगी. और इसका जो वजन है ना मतलब वो अपने आप में मतलब बुक का वजन हल्का है ना, इसके लिए हमारा भी हल्का होगा
और इसको पॉकेट बुक के रूप में यूज कर सकते हैं। एक्चुअली कहीं पर भी ले जा सकते हैं, बैग में मैं रखता हूँ इसके लिए, तो ये इसका एक सबसे प्लस पॉइंट है। और मैम थैंक यू वेरी मच, ये मतलब जो थॉट प्रोसेस आपने मतलब जनरल लोगों के लिए सोचा, और जो चूंकि आपका बेबी था इसलिए आपका वो ड्रीम था कि दशहरे के दिन ये लॉन्च हो, इसलिए हो भी गया। वो तो थैंक यू सब आपके बहुत बढ़िया। कारण होता है थैंक यू ना। Everybody- अरे अरे प्रतिभाचा फोटो या, चलो शंतनु जी आइए। हाँ, शंतनु जी, he has written article on सूक्ष्म व्यायाम और ट्रांसलेटेड खुद थे। या एक वो ट्रांसलेट केले, डाएट वरचा एक ट्रांसलेट केले। गुड गुड, बढ़िया बढ़िया। ओके, संगीता जी आ जाइए। She has written on International Day of Yoga. हाँ, क्योंकि ये कोई चीजें ऐसी है जो आम आदमी को समझनी चाहिए, तो इसलिए वो पुस्तक में रखी है। हाँ, आ जाइए। त्रिदोष Now I have one more adjective to you with your article. त्रिदोष, त्रिगुण, she's त्रिगुण। हाँ, ये त्रिगुण, ये आपका त्रिगुण है। त्रिगुण में एक गुण बहुत जिसकी जरूरत है, और ऋषभ is helping me with that गुण। Okay, Rishabh has written agam, meditation and ऋषभ म्हणजे मराठीत सांगायचं तर सिंहाचा वाटा। हाँ, बिकॉज ऋषभ था तो ही रियली वॉज ऑर्गेनाइज, इतना बहुत ही अच्छा, सो नाइस, गॉड ब्लेस यू। हाँ, वो सबको धक्का है, मुझे खाली एक, मेरे हाथ में खाली एक ही बटन था ऋषभ, बाकी वो सब जगह अरे राहु दे या ग्रेट, सो नाइस, सो नाइस। हिना आ जाइए। लिखा नहीं तो क्या हुआ, तुम हो ना। या प्रोत्साहन द्यायला होते ना। हाँ हाँ, तुम्ही काय ग्रुप फोटो साठी उभे राहिले की काय इकडे? आ जाओ, आता ऑनलाईन आहोत आपण, ग्रुप फोटो नंतर घेऊ। हाँ हाँ, आजा, चलो चला। भाई, इस तरह नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ। इथे बसा ना सरांच्या बाजूला। आजा आजा आजा, भाई ऋषभ उधर जा, आ रहा है क्या? हाँ, बहुत बीच में आजा, उधर पीछे आप तो हेड हो भाई। ओके, रेडी, आ गए सब लोग? भगवान की फोटो चलो सब लोग अपने अपने आसन पे बैठ जाइए। तो वो आपके ये वाला रही गया करेक्शन, आई कैपिटल। मैंने पहले वही देखा। ओके, नितिन ही तुझ्या गळ्यात घे। ओके, प्लीज सेटल डाउन। सबके हाथ में बुक्स आ गए हैं, पीडीएफ कॉपीज ऑनलाइन भी आ गई हैं। सो इन अ वे सब लोग ना डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने हाथ में जो आ प्लीज सेटल डाउन, नहीं कोई बात नहीं, इट्स ऑब्वियसली
obviously. वो विजयादशमी का दिवस है ना, हाथ में चौके पकड़ने का. So, धनंजय, on कर. Yeah. Okay. So, a happy occasion of release of the book on the occasion of Vijayadashmi, Dussehra. Dussehra is what? What is the meaning of Dussehra? Celebration, Vijay. Vijay. Vijay of? Achievement. Vijay, victory of the good over the evil. तो ये हम लोग जो माइथोलॉजिकल बैड्स राक्षस है, गुड ओवर बैड, मतलब पहले तो दिमाग में वही आता है, रावण आता है. बट वेयर इज दिस रावण? हमारे अंदर है. योगा टीचर्स है तो आपको बताने की जरूरत नहीं, बट दिस ऑल आर इनसाइड अस ओनली, एंड the good is also inside us. What we are doing through yoga practice is try to get the good on the surface and remove the bads. Okay, so in a way, Vijayadashmi Dussehra is a very, very important occasion, very important festival for us, because we are doing the same thing in our life. On the surface, we look very happy. We want to show a very happy face, but somewhere inside there are problems to everybody. सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, एंड सभी कोई दूध के धुले नहीं है ना. लेट अस एक्सेप्ट दैट. सो द प्रॉब्लम्स डू नॉट occur or come in our life without we deserving it. Okay, so everyone is aware of that, and that is why we are straightening our life. We are removing the bads, the evils of our life. The process is simple. We have adopted, we have believed, we trust is yoga. Okay, so if we are believing in the process, let us get these things in action. Okay, now I am coming to the shortfalls which yoga teacher is facing in his or her life. I've been seeing so many teachers. जो नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम है वही उन लोगों को प्रॉब्लम, कोई अलग नहीं. The first thing is a yoga teacher, a busy yoga teacher, because he is teaching or she is teaching so many classes in a day, he or she herself is not into practice of yoga. Okay, तो लिखने के लिए तो सब कुछ हम लोग लिख देते हैं, ट्रांसलेट भी कर देते हैं, but getting into our own life, it's a big challenge, and it's a need. Why? Because when you are going there to teach at the Shiva Yoga Kendra, they may not ask you, they may not take an exam like I do. आपका थियरी टेस्ट नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल में वाइवा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन they do judge. How do they judge? क्योंकि उनके मन की आंखों से मालूम पड़ता है उनको कि कौन योगा वाला है, कौन योगा का नहीं है. क्लास के समय आपका बर्ताव कैसा है, आपका ड्रेस कैसा है, आप कैसी बातें करते हैं, क्लास के समय आपका मोबाइल चालू होता है कि नहीं होता है, आपका बोलने का स्टाइल, क्लास के बाद में का बर्ताव, all these things, they are not making a note of it, but they are observing it. ठीक है, ऑब्जर्व किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्री क्लास है, दे आर फ्री टू ऑब्जर्व, यू आर फ्री टू गिव, नो प्रॉब्लम. हाउएवर, द पर्पस ऑफ यू टीचर्स गो एंड टीच देयर इज दैट दे लुक एट यू एंड ट्राई टू बिकम लाइक यू. सो इफ यू आर नॉट द परफेक्ट, द आइडियल इन फ्रंट ऑफ देम, हमारे पास आज दशहरे के दिन है तो लॉर्ड रामा इज द परफेक्ट, सो वी हैव एन आइडियल, but we don't see him in day to day ना. तो वो डे टू डे में किसको देखते हैं? आपको देखते हैं. हमारे योगा टीचर ने ऐसा किया, हमारे योगा टीचर तो ऐसे है, हमारा योगा टीचर ये बोलता है, उसी को फॉलो करते हैं. दैट इज व्हाई बिफोर दिस बुक रीचेस
your students. What is important is should reach you inside. So whatever is given in this thing, try to go and find out whether you are doing it. Shuddhi kriya. कितनी करते हैं शुद्धि क्रिया? करते हैं? वमन धोती करते हैं, जल नेति करते हैं, सूत्र नेति करते हैं. Why it is required? Not because it was there in your syllabus. Because shuddhis will balance your doshas. We know that. Now this has to be done and it has to be taught to your. After doing that, teach to your students. Take one topic every day to your and teach to your students. सूक्ष्म में हर रोज करते हैं, मुझे पता है. उसका मीनिंग समझो और करो. सूर्य नमस्कार everyone is doing. How are you utilizing the energy? जो पिंगला है, जो रजस है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आपके डे टू डे लाइफ में? बी अवेयर ऑफ दैट. ओके. स्लीप, अ वेरी बिग चैप्टर. मैं खुद गिल्टी हूँ. आई एम नॉट एबल टू स्लीप अर्ली. ओके, बट लेट्स ट्राई टू, you know, if we are going to inculcate this in your students, we have to start ourselves. What time are you sleeping? How much are you sleeping? Are you sleeping well or not? Are you doing your Brahmari? Are you doing your Anulom Vilom before sleeping or not? Small things. Yoga is not only in 1 hour, na? It is there throughout the day. तो ये छोटी छोटी चीजें आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Care for good digestion. I care. How much of screen are you watching? Myself, I am guilty. इसके बारे में कोई काम ही अपना काम ही है WhatsApp के ऊपर. But then how do you take care of it with this? We know that we are abusing our eyes, but what care do we take after realizing that? Okay. Then for women, care during the periods. I'm not the right authority to talk about it, but you all know about it. What to do to have your hormonal cycles proper, have proper balance in that. यम नियम के बारे में सिर्फ बुक में पढ़ते हैं, इसमें पढ़ा है इसीलिए नहीं. आई नो नो वन इज परफेक्ट. अहिंसा वादी सब बात करते हैं, लेकिन हिंसा तो करते ही हैं. बट एटलीस्ट लेट बी अवेयर. लेट अस बी अवेयर. कहाँ पे हिंसा हो रही है हमारी, कहाँ पे हम असत्य बात कर रहे हैं, कहाँ हमारा अस्त्य हमको पता भी नहीं है ना. तो थोड़ा सा अवेयरनेस उसके बारे में थोड़ा जागरूक तो करें. आसना तो वी आर डूइंग, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच वी आर डूइंग एवरी डे. ओके, बट उससे जो स्टेडीनेस है, उससे जो फ्लेक्सिबिलिटी वो हमको आ रही है क्या, मिल रही है क्या, उसके बाद में थोड़ा बारे में थोड़ा अवेयरनेस. सेक्शनल ब्रीदिंग we don't do in our regular class. I don't know whether you are doing, but if you are not doing, please include that in your pranayam. We had done one test over here where marks दिए थे, तो उसमें प्राणायाम कौन 15 मिनट के लिए हर रोज करता है, उसको मैक्सिमम मार्क्स. Why it is required? Because that is something which is the master key of yoga. So if you have to be really good practitioners of yoga, 15 to 20 minutes pranayam is a must every day. Take out time for that. You have to do it. Meditation, early morning meditation. Okay. So these are Guruji यहाँ पे बैठे हैं, वो करवाते हैं. But those who are not doing, whether you can do it, whether you can make it as a part of it. Why? You know all the benefits of it. सब पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका अनुभव आपके जीवन में होना चाहिए. कर्मयोग की बात करते हैं, इतना हम लोग काम घर में और बाहर कर्मयोग करते समय हमारे जो एटीट्यूड है, भाव है, उस तरह के भाव होते हैं क्या. लेट अस बी अवेयर ऑफ दैट. भक्ति योग, मेरा भजन सुनने आ जाओ हर सोमवार को. ये सारी प्रस्तावना इसी के लिए थी. So bhakti is it's a bhava, it's a devotion. So if you have that, your emotions will get a very good meaning. You will not be guilty of being emotional. As a yoga teacher, it is allowed to become emotional, but when you use your emotions for devotion, obviously it is going to be give you make your life rich. आहार विहार आचार विचार ये सभी मिलके यही है. क्लेशों के मेडिटेशन करके आप क्लेशों को दूर करें, उसके बारे में अवेयरनेस करना. त्रिगुण है, त्रिदोष, so many things are there. Point is, this is not just a achievement of 28 articles. It is something to remind you every day. Okay, so my request to you is get this book inside you, follow it, and thank you very much. Namo Namah.
ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू स्पीक। उसके बिना मैं नहीं जा, वापस नहीं जा सकता, उसके बिना मैं जा नहीं सकता। Come here. I think it's that because it is. Namo Namaha, everyone. Namo Namaha, and everybody online also. First of all, आप सबका स्वागत from my side also, since I have got the mic to speak. कब से देख रहे हो नितिन ही बात कर रहे जा रहे जा मुझे अवसर मिल रहा है कि नहीं? अभी मैं देख रही हूँ, अभी 5:30 होने को आए, अभी मैं बोलूंगी कब और क्या। Anyway, so सबका स्वागत। जो ऑफलाइन आए हैं आपका, क्योंकि अभी अक्टूबर ही चालू हो गए हैं और उसके बावजूद आप यहाँ आए हो, और ऑनलाइन तो आप हो, इसलिए हम आपका सबका सपोर्ट है। और ये उपलब्धि है कि हम लोग जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन आके भी हम एक दूसरे के साथ बढ़ के रह के अपना उत्साह बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग एवरीबॉडी। एंड आप सभी टीचर्स का जिन्होंने ये पुस्तक में अपना योगदान दिया है, सो वेदर इट इज राइटिंग द आर्टिकल, whether it is speaking about the book to others to raise funds, and whether it is to support in whichever way possible for the teachers to write the book. If there is a translation, there is a editing happening. So बहुत यहाँ पे 28 आर्टिकल में अभी तो आपको 28 नाम दिख रहे हैं, मगर उसको पीछे जाके देखो तो 50 के ऊपर है हम लोग who are actually working in translation and in at all levels. Okay. तो अभी ये है, वही बात मैं नहीं दोहराऊंगी। आज का जो दिवस है वो दशहरा का है, एंड दशहरे का दिवस जैसे हम विजयादशमी मानते हैं, वैसे सीमोल्लंघन का भी होता है। तो सीमा का उल्लंघन करना, क्रॉसिंग द बाउंड्री। तो पुराने जमाने में जो राजा थे वो दशहरे के दिन अपनी भूमि को पार करके दे यूज्ड टू विन and conquer the property or conquer the जमीन। तो it is a सीमोल्लंघन का दिवस। तो अभी तो हम लोग यहाँ बाउंड्री पार करने में हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल वॉर्स कैसी हो रही है, तो अभी हम उसमें नहीं जाने वाले हैं। तो हमको पर अपनी बाउंड्री हमको खुद को देखनी है। नितिन सर ने ऑलरेडी उस टॉपिक में प्रवेश कर चुके हैं वो, when he said that all of us have to get this book inside us। तो ऐसा है, हमको है ना हमारी बाउंड्री यानी कि हमारी लिमिटेशंस हम सबको पता होती है। तो और जब आप लोग हाँ भी कर रहे हैं, हाँ आई नो माई लिमिटेशन, बट व्हाट वी नो एज अवर लिमिटेशन इज एक्चुअली अवर वहम, अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हमारी लिमिटेशन हमने ही बना ली है, जब उसको पार कर लेते हैं तो वो कहाँ रही लिमिटेशन, isn't it? So when we are going to cross the boundaries, we are actually going to break all these wrong myths that we are having about ourselves only, and that's a beautiful boundary that we are going to cross. And let us not limit ourselves by calling boundary also. It's only increasing our periphery. कक्षा अपनी बढ़ाते बढ़ाते अपना विस्तार करते जाना है। मगर ये एक योग शिक्षक के लिए या योग साधक के लिए ये भी उतना ही महत्व का है। इन योग expansion is not outside. Expansion is in centering our consciousness. क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपांडेड ही है, हम लोग यहाँ भटक रहे, वहां भटक रहे, डिस्ट्रैक्टेड है, we are already all over. So when we are talking about breaking the boundary or shackles in yoga, हम लोग है ना अपने आप को सुस्थिर बना रहे, अपने एक स्वस्थान पे ला रहे हैं। तो अगर ये मैसेज हम आज के दिन दशहरे के दिन अपने साथ ले लें तो एक बहुत अच्छा आरंभ होगा हम सबके लिए। और उसके लिए गलतियां करने से मत डरना। Be open to whatever mistakes we are
incurring in our lives at personal level, at social level or wherever. Because जब भी हम गलती करते हैं ना, हमारे सामने निसर्ग आईना रख देता है कि भाई तू यहाँ गलत कर रहा है, और वो हम ही देखते हैं. सो कोई और हमको देखने की जरूरत, दिखाने की जरूरत नहीं है. वो सिचुएशन हमको दिखा देती है कि दिस इज वेयर यू आर लैकिंग. और जब भी वो पता चलता है तो वो उसके बारे में किसी को जाके कम्युनिकेट करके हाँ मैं यहाँ गलत हूँ ये बोलने की भी आवश्यकता नहीं है. जब मैंने अपने मन में समझ लिया कि ये मेरी गलती है, बस हम तो योग स्टूडेंट से इतना सीख रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, तो उतना हम भी तो अपने ऊपर काम कर ही सकते हैं ना. हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है. सो these are the 2 points I wanted to share. That's it. So that was like the icing, and I need not say anything else. I'll just call only 2 teachers who would like to share anything regarding this process. What we are, if you have anything really worth sharing, तो अगर आपके पास ऐसी कोई पॉइंट्स है कि जो आप उससे दूसरों को लाभ हो सकता है, जो बाकी के टीचर्स हैं उनको उसका लाभ हो सकता है, तो वो जरूर शेयर करें प्लीज. यहाँ के शेयर के आई वांट टू थैंक टीचर मई एंड दिस, ये सब नहीं है, ये आपका आपके शब्द जो दूसरों को, दूसरे के लाइफ में, आपके बाकी के सह टीचर्स जो हैं उनके लाइफ में अगर कुछ वैल्यू ऐड करने होंगे जरूर आके यहाँ पर शेयर करें. प्लीज. I want all our teachers to start using this book in your class. क्योंकि क्या है, योग क्लास में है ना, हम लोग आसन प्राणायाम तो सिखा ही रहे थे, पर कभी कभी क्या होता है, वी वांट टू गिव लिटिल मोर देन आसन. तो लिटिल मोर देन आसन के चक्कर में हम लोग थोड़े योग के बाहर चले जाते हैं और कुछ और ही कर बैठते हैं. So I don't have to say what we are doing outside yoga. तो उसके लिए ये पुस्तक है. आप है ना रोज मत पढ़ना, आपके भी स्टूडेंट भी भाग जाएंगे बेचारे. तो एटलीस्ट इन एवरी 2-3 days पिक वन आर्टिकल. और अभी तो सबके हाथ में PDF है. रीड द आर्टिकल इन द क्लास, या उससे जुड़ा हुआ कोई तो 2 पॉइंट हाईलाइट करके वो क्लास में बात करो उसके रिलेटेड. एंड 3 महीने आपके पास विद्यार्थी है, 3 महीने में पूरी की पूरी पुस्तक उसके गले में आपको डालनी है थ्रू द लेक्चर्स और ग्रुप डिस्कशन दैट वी डू इन द क्लास. तो फिर क्या है, इससे है ना हम प्रॉपर क्लासिकल योग से बंधे रहेंगे और यहाँ वहां नहीं भटकेंगे. Yes, so there will be a uniformity in all the centers also, and all nice centers will have. Yes, he will distribute to all others. all सभी को, जिसको भी. एंड ये पुस्तक है, ये ज्ञान का भंडार है, और ये हमने भले ही लिखा होगा मगर हमारी थोड़ी ना जागीर है. हमको भी आगम में किसी से गुरुओं से सीखा है, तो वो वी आर जस्ट पेइंग इट फॉरवर्ड. तो बिना झिझक जिसको फॉरवर्ड करना है बिल्कुल फॉरवर्ड कर दीजिए. The more you forward, the better it is for everybody. And not only in the Shiva class, in the regular class. या शिवयोग में, हाँ, आपके रेगुलर क्लास में भी इसको पढ़ा करो, because it's really a wonderful handbook for everyone. Yes, 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 yes. Come, Hemangi. So Hemangi teacher is saying that is why it is a very simple, easy language, and I think Rishabh और हम all editing team हमको बहुत झुंझुना पड़ा है सबके साथ में कि अरे इसको काटो उसको काटो, इतना सिंपल करके रखा. या I think online, if anybody wants to speak, I think that will be a good idea. Kalyani wants to speak. Yeah, Kalyani, come here. Dhananjay ji, Kalyani को highlight करो. अनम्यूट तो वो हो जाएगी. आ गए. हाँ, नमः मैम, सर और सब लोग जो टीचर्स है वहाँ पे मौजूद, उनको सबको प्रणाम.
ये बुक के बारे में एक्चुअली बहुत अच्छी बात ये है कि जो हम योग शब्द को एक सीमित कर दिया है कॉमन पर्सन ने कि योग यानी आसन करना, तो उस चीज को नॉलेज को विस्तार कर रहा है ये बुक। यानी एक एक जो आर्टिकल लिखे हैं टीचर्स ने, वो बहुत बारीकाई से उन्होंने समझा है वो आर्टिकल को, और वो आर्टिकल को लिखा है। तो कॉमन पर्सन के लिए बहुत यूजफुल होगा ये। और यूजुअली हम जब भी क्लास में जाते हैं मैम, तभी हम जब भी ये सारी चीज बताना शुरू करते हैं, जैसे यूजुअली 5 मिनट का कोई भी एक टॉपिक पे टॉक लेते हैं, तभी उनको सच में हम उनकी आंखों में एक चमक देखते हैं कि योग ये भी है क्या। तो उनको ये समझ नहीं होती है, कॉमन पर्सन जो अभी होते हैं उनको योग का नॉलेज इतना नहीं है। तो ये बुक में जैसे आपने बोला कि एक एक आर्टिकल को अगर आप लेते हो, उसमें से 2 टॉपिक को दिखाते हो, बताते हो, तो बहुत फायदा मिलेगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा। और सबको बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं, स्पेशली जो गुजराती टीम मेरे साथ काम कर रही है, उनको सबको बहुत दिल से शुक्रिया कर रही हूँ कि जब भी मैं भेजती थी आर्टिकल ट्रांसलेट करके, विद इन 2 डेज वो लोग मुझे वापस भेजते थे और एडिटिंग करके। तो बहुत सबने मेहनत की है, और ये मेहनत हमारी बहुत सफल जाएगी, क्योंकि जैसे घर घर तिरंगा है, जैसे ये घर घर योग पहुंच रहा है, और जो योग पर्सन हमारे पास आ रहे हैं सीखने के लिए, उनके नॉलेज को विस्तार करेगा। Thank you very much, sir. Ma'am, thank you. Thank you, Kalyani. Thank you very much. Anyone from offline you want to come? Yeah. Rishabh, come. अच्छा, नमो नमः। तो खुशी के मारे मेरा गला बैठ गया आज। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे पर्सनली समझ में आई इससे, इज द पावर ऑफ अ गुड इंटेंशन। क्योंकि स्कूल में भी, कॉलेज में भी हम लोगों के साथ काम करते हैं, आप मानोगे नहीं, 3 लोगों में भी तू मैं होती है। यहाँ पे 75 में भी एक कंप्लेन नहीं आई है 2 महीनों में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे ये समझ मिली कि मैम का जो इंटेंशन था, एंड स्पेशली पूरी एडिटिंग सिंगल हैंडेडली उन्होंने किया, हमारा सिर्फ नाम आया है ऐसे ही और कुछ नहीं, पर बाकी हर एक शब्द के पीछे, हर एक सेंटेंस, अभी जो ओरिजिनल ऑथर है उनको समझ में आएगा कि कहाँ चेंजेस किए हैं। पर जो उनकी थिंकिंग है, ऐसा नहीं कि मेरा आर्टिकल बचा, मेरे इसमें भी बहुत चेंजेस किए उन्होंने। तो सभी आर्टिकल में जो थॉट प्रोसेस था उनका, कि ये जब कॉमन आदमी पढ़ेगा तो वो क्या सोच सकता है, हम वो नहीं सोचते जनरली। हम लिखते वक्त क्या देखते हैं, मुझे ये पता है, मैंने इधर ये पढ़ा, ये लिख दो। पर वो जो एक थॉट प्रोसेस था उनका, वो स्पेशली वो एक जो इंटेंशन था कि ये कॉमन मैन के लिए होना चाहिए, इसलिए आज ये इतना सुंदरता से आई है। और दूसरा, हम सभी जब इंटेंशन लेते हैं, हम में से कोई ऑथर नहीं है, राइटर नहीं है, बात करना अलग बात है, लिखना अलग बात है, फिर भी इतने सुंदर आर्टिकल्स एक एक सभी के आए हैं। और दूसरा, ये 1 पेज के टॉपिक्स नहीं है, इन पे लिखने जाओ आराम से 10-15 पेज हम में से हर कोई लिख सकता है, भाष्य भले ही नहीं लिख पाए, उसको फिर भी 1 पेज में लाना। ये सब वो इंटेंशन जो हर टीचर ने लिया, जो वो योगिक माइंडसेट रखा था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एक मुझे बस हाईलाइट करना था कि एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हो तो प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम सब वो सममनस्व के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वो जो शुरू में प्रेयर मैम ने बहुत सुंदर सिलेक्ट किया, संग अच्छा जो हम सम्मत, तो वो इस पूरे प्रोसेस में सार्थक हुई है। थैंक यू। Very well expressed, Rishabh. So we really look upon you to lead such projects and bring the institute in the true sense in front of people in your generation. Of course, why you? Because you are from a different generation, and that is how it is going to be a connection between your connection between this generation and that generation, and that is very much required. Be it you, Vaikari, these people, I really look upon them to take this process ahead. और कोई बोलना चाह रहा है? Okay, no problem. I'm sure you have a lot of things to say, but I have put one very big condition, and you're honoring that condition. I really accept that, and I admire that. No problem. Everyone has a lot of things to say, but we will close the function. We will respect time, and before closing, I want you to
And there's a today morning we had a very bad news coming of Dr. Gore, Dr. Makaran Gore. We are very close with him, and he has been here. Myself, Devangi, Sandhya ma'am, we had gone to his house to invite him for the therapy workshop. Some of you were part of that workshop, and through that the connection happened. And every time we are meeting, I have spoken to him very recently for my project, also research project on Shitali and appetite. So he has guided me over there also. So that was a real shock for us. So please let us pay respect by standing up and staying in silence for 2 minutes. Online, please. Online people, please you may honor in your own way. Thank you very much. Okay, let us close the session with a prayer. All of you can recite with me. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayah. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschit dukha bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Okay. Thank you very much. We close the meeting officially. Okay, Namo Namaha.